So, in the last class, we were discussing about lasso and rich regression. So, according to the concepts, we learned linear regression, okay, which is having some issues. That is, here we can say overfitting, okay. And what is this overfitting? When your training accuracy is more and testing accuracy is less, okay. What is our expectation in case of linear regression? Our expectation is we require best fit line. So here is the best fit line. That means your predicted points must come on the actual line. Okay. However, we understood that in case of overfitting, your training during training, your accuracy is good, your score is good. Okay, so your training points, that means the predictions during the training, will come either on your actual line or near to the line. Okay, they may be present certainly in this particular way during training. But when I am proceeding forward for the test, okay, in that particular case, your point, that is the predicted point, may be available far away from the actual line. This means that your R2 score is less. Okay, that means R2 score, as I already told, when you are going to put the points over the line, you try to fit the points over the line and you check how the points are matching. So your R2 score is less during the testing purpose. So this is the problem of overfitting. Then a solution came, and a solution came in two forms. That means one is L1 and second is L2. These are the solutions which came. Okay, that means we were talking about regularization techniques. Regularization. Okay. And in a general, when we studied in the last class, what is this normalization or regularization? Is my voice proper to everyone? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So I request if anyone is having issue related to the voice now, kindly check your connectivity. All right. So in the yesterday class, we did studied about L1 and L2 regularization techniques. And what is this regularization? We say a regularization or normalization is a process to convert. It's a process to convert something in a standard format. Okay. So what we did, we are available with a vector, for example, 2i plus 3j, and I want to perform the normalization of it. So it's been told that, sir, you need to follow unit vector technique. Unit vector technique, and a unit vector means vector divided by its magnitude, that is called as a unit vector. Okay, so you did performed that 2i plus 3j will be divided by its magnitude, that is equal to square root of 2 ka square plus 3 ka square, that means 9 plus 4, that is 13. Okay, now you will say, sir, it is a unit vector. Okay, so ultimately, and in the last class also there was a discussion related to the unit vector. That means I am dividing a vector into its components, small components. So that's what I did here. Okay, because I divide by its magnitude itself, so obviously I'm dividing it into its components. All right. So this is the normalization process which we studied. And and what will happen by this normalization if you convert something into standard notation? How it's gonna help me? How it's gonna help me? That means you can
you can have the distribution of the data. Okay, you can have a distribution of data into some standard format. Okay, that's what you can do. Okay, now what is the standard format? For example, if you do division like this thing, so you are going to get the values between 0 to 1, something like that. Okay, so for each and every features. And one more thing I want to put a mark here, that what these vectors actually represent. Let me share my complete screen because I will be requiring much more rough sheets. Okay, so let me share my complete screen. Okay, so what these vectors represent. See, you are available with the data set. Okay, so here are the features which are been present in the data set. Okay, this is your target Y. Okay, the features are x1, x2, x3, x4, x5, and we told that it needs to be represented in a form of a vector notation. So all these features. So for example, x1 I cap, something like that. Now we can give any vectors, x1, x2, and x1 all these things I, and for example j, then x3 k, then I can have x4 something. I can have some representation. Okay, so the point is, all these features needs to be represented in a vector notation. Am I right or not? Now please tell me, am I right or not? Or there is some another theory related to it? Because you are studying about 2i plus 3j, that's what you are studying. So is it okay to represent these vectors in a form of ijk, or there is something else? Because these are the features which I am available with. So what I'm going to normalize, that's the question. What I'm going to normalize. So in general, if we do talk about the formulas for the normalization, that is one of the formula, for example standard scalar. Okay, so what we do, we calculate the mean of all the values present in the x1, okay, mean, and then we do subtract a particular value, that means mean, from the particular value which is presented in, this is called as, and divided by the total number of values which are present here. So that will be called as a scaling. That's called as a scaling. Okay, so it will turn up the values between 0 to 1. So here if I say I'm representing this x1 I cap plus x2 j cap plus x3 k cap, what actually is this a right way to represent it in a form of a vector, or is it not a right way to represent it? What's your opinion? What's your opinion? Because see, we will be having a equation y equal to mx plus c. When we increase this equation, that means with respect to the different features, then it will turn up to be y equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2, and so on. And if I want to represent this thing in a form of a vector, what should I am going to write? Please tell me, help me. How should I represent this equation in a form of a vector? How should I do this? Or these are your independent vectors? Are they? Y vector is equal to x1 vector plus x2 vector plus x3 vector plus so on. What these are? Tell me. So they independent Huh? independent vectors. Okay, these are independent vectors. That's what you are saying. Okay, Then what huh? one is like we have that there is no colinearity, so there must be What, there is no, collinearity. there is no, There is no collinearity there among should not the. be, there should not be any collinearity. Yes, we should That's have why to follow up the property of linear regression. There should not be any collinearity. There should not be any correlation. Okay, that's why they should be independent vectors. that's why it should be an independent vector. Okay, these should be an independent vector because there should not be any collinearity between them.
Okay, so let's consider, okay, these are the independent vectors. The point is they are all are available with the coefficients. They all are available with the coefficients. And we did studied in linear regression that we need to solve for the coefficients only. Okay, we need to solve for the coefficients only. We need to find it these values and then we need to put these values and then we need to find the predicted value. That's what we have learned in case of linear regression. Ultimately, if I say that these are the vectors and if I need to apply regularization, so where the regularization will be applied? If I say that we are having L1 and L2, so L1 is your lasso and L2 is your ridge regression, and in case of lasso regression you need to calculate the mod, and in case of your L2 you need to calculate the square of the mod. Okay, then overall it will be square root. Okay, summation. Okay, this will be the summation terms. Okay, that's what we have to do. So in case of lasso regression, first one, we need to calculate the summation of what? Mod of these beta 1 plus beta 2 plus beta 3 and so on. This will be the term. Okay, and in case of L2, what we have to perform? In case of L2, what will be the task done? The task will be beta 1 ka square plus beta 2 ka square plus beta 3 ka square plus so on, overall ka square root. This will be L2 and this will be L1. I was just thinking something like the kind of calculation na, which you need to be done na, it should be like this only, because I don't care about x and y. You know that these terms are the fixed terms. Whatever be the changes required and whatever be the penalty which you want to impose, that will be imposed over these terms only. What else we can do with x and y? And you already studied, sir, that there is a cost function. There is a cost function. And what is cost function? Sir, cost function is y predicted minus y actual का square का summation का root. नहीं, we have to take root or not? Do we have to take a root or we need to skip it? Do we have to take a root or we have to skip it? नहीं ले. Do we have to take a root or not? तो root mean square, it will be like root mean square error. बट No, हम sir. तो एमएससी की जरूरत है मीन स्क्वायर एरर की. ओके, तो इनकेस ऑफ मीन स्क्वायर एरर डोंट टेक द रूट. सो ये तो हो गया आपका समीशन. ओके, सम and this is the square and divided by capital N, so it will be mean square error. This is called as cost function. Okay, and you told in the yesterday class that we need to add something. We need to add something with the cost function as a name of penalty. Why we are giving penalty? The reason is, sir, your model is overfitting, sir, we need to give a penalty to it. And you have learned in the last class only, sir, there is a penalty. That penalty will be lambda and slope, and this is for L1. Or and then there will be lambda and the slope ka square. This will be for L2. You learned these two are the penalty. So one is for lasso regression, one is for the ridge regression. These are the penalties which you need to impose. In the last class you studied. Okay, so let me have some more talk about it. If I would say that cost function, that's what we are studying. This is the cost function. In the last class we have seen, and this is the penalty. So we have seen the penalty for lasso also. We have seen the penalty for ridge also. And why? Because of this overfitting issue. In the last class, that's clearly discussed. Okay, so yesterday an issue came, sir. Ye lambda, this lambda, what is this, sir? And you have included slope here, sir, in the formula. Okay, so in context of ridge regression, lambda is a regularization parameter. Okay, it's a hyperparameter regularization parameter that control the amount of shrinkage applied to the regression coefficients. Regression coefficients. So I did told that where you need to apply this stuff, this L1 and L2, where you need to apply. अब in definition only it's telling regression coefficients. तो यही तो हैं, ये these are the coefficients ना in your linear regression line. यही तो coefficients हैं, and I need to apply this penalty over the coefficient because x and y terms I can't do anything.
Okay, so jo whatever be the work is happening na, that is happening over the coefficients only, so I need to apply this regularization technique over these coefficients. That's what the definition said. And this will be according to the lambda, that is your hyperparameter, regularization parameter. We need to apply according to it. So, in case of ridge regression, that is used to address multicollinearity, which occurs when there is a high correlation among the predictor variables in a regression model. It adds penalty. Okay, we are adding penalty. So we have seen that, okay, when to apply lasso regression and when to apply ridge regression. Okay, we did studied yesterday, and it's been told, sir, ridge regression when there is a outlier is present. So some there is there are various concepts which say many things. In the yesterday we were studying, then it's been told that key ridge regression has been applied when you are available with the outliers. We did have a discussion over it. Okay, because why? In case of ridge regression, you are going to calculate the square root and all these things, but in case of lasso, you are not going to do it. Here, one more thing written in the ridge regression, that sir, to address the multicollinearity, which we do avoid in case of regression, there should not be any multicollinearity. This it. So if there is a issue of multicollinearity, if there is a issue of outlier, then we are going to apply the ridge regression. We need to remember these things. So this is a penalty term. Okay, a penalty term to the ordinary least square objective function. So either I will say objective function or a cost function, it is same, to reduce the multicollinearity by shrinking the coefficients towards zero. That means whatever be the coefficients, here the coefficients are na, I need to shrink them towards the zero. Okay, and here it is the formula. There is regression, the objective function is like this. RSS, it's your formula only. This is RSS, cost function. This is RSS. Okay, plus penalty. So here is a penalty. They mention lambda into coefficient ka square. They said coefficient ka square. Okay, so RSS is a sum of squares of residual. We very well know, na? Predicted minus actual ka square is a residual ka square only. We know it. Okay, the second term represent the penalty term, which is added to the objective function, and lambda is a regulation parameter that controls the amount of shrinkage, how much we need to shrink the values of lambda, these parameters, coefficients, how much we need to shrink. So by tuning the lambda value, you can strike a balance between reducing the multicollinearity and maintaining the predictive power of the model. The smaller the lambda places less emphasis on shrinkage, allowing the model to fit more closer, but it may lead to higher variance and instability also. That could be further issue. Okay, so here we are saying that if you are available with the values of lambda, various values of lambda, so your points na, which you are getting in the predictions na, they will come close to the actual line. है ना? They will come to the close to the actual line. Well, that was the issue happened in case of linear regression. We got overfitting, and why we got overfitting? Because test points are coming far away from your actual line, so we want to make them closer. So for making them closer, we need to apply some maths over it. We need to perform normalization over it. Okay, so with the help of normalization, we are trying to shrink the value. We're trying to shrink the value of these coefficients, beta 1, beta 2, beta 3, and all these things. Just try to shrink those values. Okay, so that my point should come closer to the actual line. So that's what they said here. Okay, so but the point is, a larger lambda increases the amount of shrinkage. Larger the value of lambda, amount of shrinkage will be more, which helps to stabilize the model and reduce the impact of multicollinearity, but it may sacrifice some predictive accuracy. Okay, so if your amount or lambda value is higher, now it will help you in your amount of shrinkage. Now, in this particular notes, which we were going through yesterday, here it is. Hmm, here only, this one notes only. If your value of lambda is zero, that means the cost function of ridge regression and the cost function of linear regression is same. Obviously, if your lambda becomes zero, if your lambda becomes zero, because you have been told that cost function plus lambda, lambda, and what's mentioned, lambda, and then what's mentioned here, you can see, hmm, coefficient ka square. Okay, coefficients square.
सो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज समवेयर, सर वो आपने स्लोप लिखा था, स्लोप लिखा था। ओके, तो अब स्लोप क्यों लिखा था, वाइट स्लोप का स्क्वायर। तो यस्टरडे यदि इफ यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन, तो आप इक्वेशन की तरफ फोकस करें। व्हाट इज द इक्वेशन, वाई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री। तो भाई ये बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में व्हाट दीज आर, ये इंटरसेप्ट होता है, ये भाई ये स्लोप होता है, तो ये तो स्लोप ही है ना, ये स्लोप है, दीज आर स्लोप्स ओनली। तो कल के फॉर्मूले में, यस्टरडे इन आवर फॉर्मूला वी डिड टोल्ड कि सर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट L1, तो इन केस ऑफ L1 वी आर हैविंग कॉस्ट फंक्शन प्लस एक पैरामीटर है और स्लोप है, मॉड ऑफ स्लोप है। ठीक है, तो आज भी यही तो बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। L2 में व्हाट आई एम हैविंग सी एफ प्लस लैम्बडा स्लोप का स्क्वायर है, ये चीजें हैं, दीज टू थिंग्स आर देयर। तो स्लोप क्या है भाई, वो स्लोप यही है सब, ये बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री प्लस बीटा फोर, यही है स्लोप। तो इन्हीं को ही मुझे जो है, ये जो वैल्यू आएगी, वट एवर बी द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम ईयर, इन मॉड निकाल के आऊंगा, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ इट्स सम फैक्टर, यही है मेरा रेगुलराइजेशन फैक्टर। और हाईएस्ट वैल्यू रही यदि रेगुलराइजेशन फैक्टर की, वी आर गोइंग टू चेक। सो दे आर सेइंग इफ लैम्बडा इक्वल टू जीरो, यदि जीरो हो गया तो ये तो इट्स क्वाइट क्लियर कि तो निपटा ही देगा इसको। इफ लैम्बडा इज जीरो so this term is gonna zero, if this term is gonna zero I am only available with the cost function, बात खत्म, that's it। Now if lambda is not going to be zero, okay, it's something else। क्या बोला, if even adding the hyperparameter to the original cost function the training accuracy won't improve, it will keep on changing the, if we keep on changing the value of lambda and try to find the best parameter। अब ये हमें करना पड़ेगा भैया, keep on changing करना पड़ेगा, so that we can find the best value of lambda जिस पर मुझे आपका best fit line approach हो जाए। That's what we are expecting। So as the cost function is changing after adding a hyperparameter also, the model will also change and it will try to be closer to the best fit line। That's what we are expecting। तो the thing is कि shrinkage वाली बात हुई, we did told a larger lambda increases the amount of shrinkage which helps in stabilizing the model, और भी बात हुई ऊपर, क्या कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, दिस लैम्बडा वैल्यू, ये जो पैरामीटर है रेगुलेशन पैरामीटर, अमाउंट ऑफ श्रिंकेज, दैट्स व्हाट इट डू। यस यस मिस्टर अहमद, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Sir, we will demonstrate in hands-on like those techniques in the future. Yes, we are going to do that because in tomorrow class I'm going to perform the coding first. Okay, that means Oh, code over. First, I need to implement a linear regression. Then I'm going to implement region lasso regression. That means a Python code for them. okay, Okay, so okay. whatever be the maths which we are learning right now, no, we are going to implement Okay. it on Python. It will be super. Okay, so the point here is data, because you know where we are applying all these techniques now, who to regularize, किसके ऊपर करना है, whom to I am perform regularization, only data ना, डेटा, एंड डेटा इज योर दिस थिंग, ये सारे फीचर्स हैं आपके पास इन योर डेटा, ऑल दिस फीचर्स आर देयर। एंड फिर आप ये बोल रहे हैं सर कि ये जितने भी फीचर्स हैं देयर इज अ कोएफिशिएंट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ इट, ये है, तो वाई मेरा टारगेट था, एंड वी आर अवेलेबल विद बीटा नॉट, ये आपका इंटरसेप्ट, एंड देन बीटा वन एक्स वन देन बीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन, यही तो था। और व्हाट टास्क आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट कंट्रोल लैम्बडा जो है, दिस इज अ कंट्रोल, ओके, कंट्रोल ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, ये कोएफिशिएंट्स को करने का काम है इसका, लैम्बडा का। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर। ऑलराइट, तो ये वी दैट मीन्स ये जो पूरा कैलकुलेशन होगा उसमें वी आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जहां पर अपना जो डेटा पॉइंट्स हैं, अच्छा क्या रोल है अल्टीमेटली, गोल क्या होगा, व्हाट विल बी गोल, यही है कि वी नीड टू ब्रिंग द पॉइंट्स क्लोजर टू द बेस्ट फिट लाइन, जो कि हमें नहीं मिल रहे थे, कहां पर, वेयर वी आर नॉट गेटिंग टेस्ट में द पॉइंट्स वर गोइंग फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल लाइन, बट आवर गोल इज टू ब्रिंग दोस पॉइंट्स नियर टू द एक्चुअल लाइन। ओके, तो क्या करें,
तो वी एडेड अ पेनल्टी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, L1 and L2 के फॉर्मेट में वी एडेड अ पेनल्टी, एंड एक टर्म वी एडेड लैम्बडा इनटू द स्लोप। ओके, तो स्लोप है तो लेसो, एंड स्लोप का स्क्वायर है तो रिज रिग्रेशन है। these two are the terms. तो हमने in the previous class we did talked about L0 also, ठीक है, वी डिड टॉक अबाउट L1 L2 एंड L इन्फिनिटी भी बोल दिया था। उसमें बोला था कि सर जो हाईएस्ट टर्म है ना उसी को उठा लेना, बस वट एवर भी द हाईएस्ट टर्म है उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो इन जनरल वी डू टॉक अबाउट L1 एंड L2। और आज जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि L2 जो है इट डील्स विद योर आउटलायर्स ऑल्सो, वहां पर भी हेल्पफुल कर देगा। मल्टी कोलिनियरिटी इज ऑल्सो बिन देयर, वो भी ऐड कर देगा ये काम। We did studied in the notes. Okay, it will take care of these things. तो more to be studied यहाँ पर। तो relationship between slope and lambda, in the last class only we did talk about this thing. Okay, तो how they are going to behave इस तरीके से। Okay, if slope is going to increase, then how the value of lambda is going to increase. With the increase in the lambda, slope is going to decrease. That's what they are saying. With the increase in the value of lambda, slope is going to decrease. Okay, so slope is inversely proportional to the lambda. Okay, this means the hyperparameter increases, the slope decreases, and vice versa. It's quite clear. Okay, so this is your lessor regression. Here is the penalty. Now you should not be having any doubt related to the slope, because we now understood what is slope. Slope are the coefficients. These are the coefficients of your equation. Okay, regression equation. That's the coefficients. All right, that means ultimately features. And what is the aim? The lessor regression is to reduce the features. We are going to reduce the features ultimately. बस समझ में आया है क्या? अच्छा, अभी तो और खेल शुरू हो गया। द गेम स्टार्ट्स नाउ। तो भाई क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। yesterday only there was a question came, I guess Mr. Ahmed only asked the question, sir, feature selection and all these things, sir, do we have to come up with these topics also? Okay, or every line, every word do have a meaning. Okay, और ये निकल गया यहाँ से, जरा फिर से पढ़ो, just read it once again. The main aim of lessor regression is to reduce the feature, बस। तो फीचर या डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता क्या? Nash reduction, what we do, तो हमने PCA, we did covered a PCA in in general, when I was talking about covariance matrix and all these things, we did seen the maths what's used in the PCA. Okay, so here same kind of thing now, that means logic. Okay, logic is saying that means what I need to reduce the features. तो overfitting आती किसके कारण है, अब समझ गया है why overfitting occur, क्यों आती है overfitting? What's the reason behind overfitting? One of the reason behind overfitting is you are considering all the features, and you are putting all the features in your model dot fit. इसमें उठा के सारे पटक दिया आपने, x, y कर रहे हो, you put all the features। अभी इतने सारे फीचर हैं, तो बिकॉज ऑफ, अच्छा अब ये घुमा के बात करते हैं अपन। तो अब इतने सारे फीचर्स, इफ यू आर गोइंग टू पुट इनटू द मॉडल, तो भाई इसमें कई ऐसे फीचर होंगे, there are many features present in your data set which are co-linear to each other, which are co-related to each other। अब भैया ये ऐसे फीचर आएंगे तो यार ओवरफिटिंग देंगे ही देंगे, तो सीधी सी बात है। और इट्स बीन ऑलरेडी सजेस्टेड लीनियर रिग्रेशन में कि ये चीज नहीं होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, these should be least। अब लीनियर रिग्रेशन, इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन कि इनको खत्म कैसे करूं, I don't have any solution for that. How to remove those features which are collinear and which are correlated, और तो ये तो खेल हो गया। तो क्या करें, फिर हमने बोला चलो ठीक है, नहीं हो रहा तुमसे, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो फीचर है वो रिलेटेड है, द फीचर इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट्स। हाँ, फीचर इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। बोलो कैसे, हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, क्योंकि सर आपने बोला ये बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 प्लस बीटा थ्री x3 ये हैं, तो दिस फीचर इज रिलेटेड विद बीटा वन। इफ द वैल्यू ऑफ बीटा वन इज मोर, ऑब्वियसली दिस फीचर इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर। भाई इसका ये तो खुश हो गया, ठीक है, बीटा वन इज मोर देन x1 इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर। अब
ये अब जैसे वही है, ये बीटा बीटा थ्री है, ये बीटा बीटा थ्री बीटा फोर वट एवर बी द थिंग्स आर, तो इनका कारण ओके, और कैलकुलेशन भी इन्हीं के बनते हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ओवर दीज ओनली, तो क्यों ना अपन एक काम करें, ठीक है। तो ये रेगुलरेशन टेक्निक लगा दें अपन, रेगुलेशन टेक्निक लगाई, जहां पर क्या बोला कि सर वी आर गोइंग टू परफॉर्म दीज थिंग्स, बीटा वन, जैसे L1 लगाया, बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री एंड सो ऑन, ये करा, और एक लैम्बडा पैरामीटर है, लैम्बडा पैरामीटर जो इट्स वैल्यू समथिंग समथिंग लाइक कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इन कोएफिशिएंट्स को ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ये इंपैक्ट करने वाला है, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट। तो जो भी अब इंटरनल है, दिस इज अ मैथ्स इंटरनल हैपनिंग, ओके। तो आई गेस ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं, आई हैवंट गॉट कि सर थोड़ा सा मैथ्स और आप कुछ वैल्यूज और कुछ न्यूमेरिकल लेकर चलें, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर कर दूं, ओके। तो हुआ ये कि ये इनका इम्पैक्ट है बीटा वन। अब मान के चलिए कि योर फीचर्स, ठीक है, जो फीचर्स भी ये हैं आपस में कोरिलेटेड है या मल्टी कोलिनियर आर देयर ना, इफ ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, ये जब इनसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करने वाला है, उनका इम्पैक्ट कम करने वाला है, यानी श्रिंक करने की कोशिश जो है वो करेगा, और कोशिश ये रहेगी कि वो इम्पैक्ट जो मल्टी कोलिनियरिटी और इनका था वो कम हो, and your points should come closer to your line, that's what the task which this lambda is going to perform। तभी अच्छा यहां इतना सा बोल गया वो कि द एम ऑफ लेसो रिग्रेशन इज टू रिड्यूस द फीचर। तो अभी एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक एक शब्द पे, सिंगल वर्ड कीप्स इंपॉर्टेंस। तो ये यदि आप ढंग से नहीं पढ़ा, अच्छा रिड्यूस द फीचर एंड हेंस दैट कैन बी यूज फॉर फीचर सिलेक्शन, हाँ फीचर सिलेक्शन, अब आई बात समझ में। तो हो क्या रहा था, इफ वी डू कीप ऑल द फीचर इन अवर मॉडल फॉर द ट्रेनिंग, तो उसमें ये गड़बड़ हो जाएगी कि दोज फीचर्स विच आर रिलेटेड विच आर कोलिनियर, तो वो भी फंस गए। अब वो फंस गए तो उन्होंने उठा के मॉडल ओवर फिटिंग मार दी। तो मुझे आई डोंट वांट टू यूज दोस फीचर्स ना, आई वांट टू एलिमिनेट। तो एलिमिनेट कैसे करें, तो आपके सामने, हाँ सर एलिमिनेशन इन ना, फॉर एलिमिनेशन ना देयर इज अ फीचर सिलेक्शन टेक्निक दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलराइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, एंड सर इन रिग्रेशन वी आर हैविंग L1 and L2, two kinds of regulation are there, these techniques, ओके। सो वी आर गोइंग टू ऐड अ पेनल्टी ओवर द कॉस्ट फंक्शन, कि भैया ऐसा मत कर देना कि तुम हर कोई ऐड कर दो, ओके। तो ये आपका काम करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ से हम बच पाएंगे रेगुलराइजेशन की हेल्प से, फॉर द ओवरफिटिंग एंड मल्टी कोलिनियरिटी। देन योर स्कोर, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन है, डिजायर्ड है, दैट योर प्रिडिक्टेड पॉइंट्स ना वो एक्चुअल लाइन पर आ जाएं, मतलब क्लोजर हो जाएं, तो आपका स्कोर R2 स्कोर गुड हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईयर, ये काम करेंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट में किस में होना, कोएफिशिएंट में ही होना है ये सब एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये टकराए, ये मल्टीप्लाई होगा इनसे, इट्स गोइंग टू डू, ऑलराइट, यही बोला गया। और यहाँ ये वापस से फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, अब तो ये रट ही गया फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नाउ इट्स पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। सो फॉर L1 लेट्स सो दिस इज द केस, और सिमिलरली रिच दैट स्लोप का स्क्वायर करना है, यानी कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करना, ये काम है। डिफरेंस क्या है भैया दोनों के अंदर, द मेन डिफरेंस बिटवीन रिच एंड लेसो इज द वे दे श्रिंक द कोएफिशिएंट। तो श्रिंक तो करना है उन्हें, श्रिंक करना है, तो जो जितना ज्यादा श्रिंक हो गया उसका इंपैक्ट कम कर दिया इसने। अच्छा एक चीज हो और सुनो, एक चीज और बड़ी बात, अब श्रिंक करने का मतलब क्या है भाई, सर श्रिंकिंग का तो बता दो, श्रिंक कर रहा है ये, व्हाट डज इट दिस मीन श्रिंक, ठीक है। तो इफ यू से दैट दिस इज योर इक्वेशन, बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 प्लस बीटा थ्री x3, ये आपका इक्वेशन है। दैट मीन्स इन योर डेटा सेट यू आर अवेलेबल विद थ्री फीचर, x1 x2 एंड x3, ये तीन फीचर है आपके पास। अब ओवर फिटिंग हो गई, तीनों का रख दिया, ओवर फिटिंग हो गया मेरा मॉडल, तो क्या करूं, व्हाट शुड बी डन। तो मैं रेगुलराइजेशन, आई एम गोइंग टू अप्लाई द रेगुलेशन। रेगुलराइजेशन क्या करेगा, ये जो ये इनकी वैल्यू है, ये बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री, इनकी वैल्यू श्रिंक करेगा। तभी तो पेनल्टी बोलते हैं उसको, पेनल्टी का मतलब क्या था, आपके पॉइंट काटे जाएंगे, ये तो पेनल्टी होती है।
तो हर एक वर्ड का मीनिंग अपने रियल लाइफ से वी आर गोइंग टू कनेक्ट। सो पेनल्टी मीन्स आपके पॉइंट कटेंगे भाई, तो ये पॉइंट किसके कटेंगे, ये इनके कटेंगे कोएफिशिएंटों के। तो अब मैंने मान के चलिए ये जो ऐसे थे कोएफिशिएंट जो परेशान कर रहे थे मुझे, ठीक है, कि सर वो मल्टी कोलिनैरिटी वगैरह थी, तो यदि मान के चलो मैंने बीटा वन की वैल्यू नियरली टू 0.00 ऐसी कर दी, और ये 0.01 है कहीं, मतलब ऐसा श्रिंक हुई है वैल्यूज, ओके, इनकी कोएफिशिएंट्स की, और ये कुछ भी है, मतलब मान के चलो 0.5 वट एवर भी द वैल्यूज है, तो ये तो बहुत कम हो गया, दैट इज नियरली टू द जीरो, तो इसका इम्पैक्ट तो मैंने नलीफाई कर दिया, अल्टीमेटली मैं इसको नियरली इक्वल टू जीरो बोलूंगा, तो ये बीटा वन का तो खेल ही खत्म, तो बीटा वन योर फीचर इज ओवर। तो ये तो फीचर सिलेक्शन था। तो अब मैं कौन से फीचर्स को सिलेक्ट करूंगा, मैं सिलेक्ट करने वाला हूं इस फीचर को और इस फीचर को, x2 एंड x3 विल रिमेन एंड x1 खत्म। क्यों, क्योंकि श्रिंक कर दिया आपने। तो श्रिंकिंग, वी आर परफॉर्मिंग श्रिंकिंग बाय रेगुलराइजेशन टेक्निक ओनली, इसी से ही कर रहे थे कि भाई तू बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है यहाँ पर, तो लेट मी श्रिंक योर वैल्यू। ओके, सो दैट्स द केस। यस, यस भीष्म, आस्क द क्वेश्चन। सर हम लोग फीचर्स को का स्लोप को श्रिंक क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज क्यों नहीं इसलिए कर नहीं रहे हैं नहीं, इसका? करना ही पड़ेगा श्रिंक भीष्म। देखो, वी नीड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दोस फीचर्स जो कि मुझे क्या कर रहे हैं, ओवर फिटिंग दे रहे हैं, मल्टी कोलिनियर है, उन्हीं को तो मुझे कम करना है। इफ आई एम गोइंग टू हैव द वैल्यू, जैसे मैंने क्या बोला, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस, जैसे बीटा वन की वैल्यू 0.0000 समथिंग कर दूंगा मैं, इनटू x1 मुझे परेशान कर रहा था, व्हाट इज फीचर सिलेक्शन, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली दोस फीचर्स विच आर हाईली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई टारगेट, ठीक है, हाईली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई टारगेट, उन्हीं को आई नीड टू कीप इट इन माई कैलकुलेशंस। मैं सबको रख दूंगा तो वही तो प्रॉब्लम हो गई थी ना, सभी सभी फीचर्स, ऑल फीचर्स को रखना, ये तो प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इन जनरल ऐसा बोला गया कि लीनियर रिग्रेशन में अजम्पशंस क्या थे, अजम्पशन ये थे मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए, कोरिलेशन शुड नॉट बी देयर, सर ऑल द फीचर्स, सुन तो लो, ऑल द फीचर्स शुड बी रिलेटेड, ऑल द फीचर्स शुड बी रिलेटेड इन अ लीनियर वे टू द टारगेट, ये बोला हाँ गया था। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी आपसे, ये सारी चीजें बोली थी, राइट। यही बोले थे, ये अजम्पशन है, ये पहले फॉलो अप करें, उसके बाद देन वी नीड टू अप्लाई योर लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ उसकी करने के बावजूद यदि ओवर फिटिंग हो गया, योर मॉडल इज ओवर फिट, तो भाई यार एक काम करो, फिर पूरी प्रोसेस तो वही है, योर कंप्लीट प्रोसेस इज सेम, वही तो कर रहे हो, कैलकुलेशन, कॉस्ट फंक्शन, वॉस्ट फंक्शन, वही तो कर रहा है पूरा लील, बस एक चीज और ऐड कर दी उसने, पेनल्टी, पेनल्टी कर दी उसने ऐड, मतलब ओवर सो फिटिंग। इसमें हाँ, हमें पता कैसे चलेगा कि किस फीचर का हम लोग को वैल्यू सबसे कम करना है, आपको श्रिंक करना जरूरत है, ही, किसका? हाँ, यस यस, क्या कहना चाह रहे हैं, किस फीचर का क्या करना है, वैल्यू कम करना है, ओके। तो भाई हाँ क्या है, हाँ, ये इंटरनल जो मैटर होगा, इसका पूरा कैलकुलेशन ये करेगा, है ना, अभी तक हमने देखा नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा था, आई एम मतलब मुझे कोई न्यूमेरिकल नहीं मिला, हैवंट फाउंड एनी न्यूमेरिकल कि मैं ऐसे लेकर चलूँ, ओके, और फिर मैं आपको बता दूं कि कौन सा फीचर कैसा क्या कैलकुलेशन के अंदर इट्स गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके। तो जो मुझे क्योंकि कैलकुलेशन में, इसमें इसमें फीचर सिलेक्शन हमारे अंडर कंट्रोल है या पीसीए की तरह है कि अननोन नहीं, कोई भी? कंट्रोल्ड है सब, इट्स अ कंट्रोल्ड मेथड, और कंट्रोल कौन कर रहा है, तो वी लैम्बडा, कैन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय लैम्बडा। ओके, सो वी कैन गो अहेड विद द फीचर दैट वी वांट। हाँ हाँ, वी कैन गो हेड, वो उन्हीं को कंसिडर कर लेगा फीचर्स को, ठीक है, जो कि मेरी पॉलिसी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। और ओके। ये अच्छा एक चीज और, कंट्रोलिंग भी कैसे क्या हो गई, क्योंकि अब आप समझे कंट्रोलिंग भी वैसे हुई है, वो द थिंग इज इट्स ऑल वेक्टर्स, वो पूरा वेक्टर नोटेशन है, वेक्टराइजेशन, और जितने भी वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये भी सुनो कैसे कर लेगा, चलो अब बताइए, अब और थोड़ी सी खुल के बात हो। तो क्या होता है कि वेक्टर में आपने नॉर्मलाइजेशन टेक्निक पढ़ी ली, पहले तो इन्हीं का न्यूमेरिकल देखा था, ये तो कॉन्सेप्ट तो बाद में पढ़ा है, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन नॉर्मलाइजेशन, आपने बोला था, और आज भी समझा दिया कि 2i प्लस 3j यदि ऐसा है, तो ये ऐसा करके अपन वी आर गोइंग टू हैव, तो उसको ऐसे नॉर्मलाइजेशन हम कर देंगे, है ना, ये मॉड निकालना, ये मॉड निकालना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, है ना। यूनिट वेक्टर में यही करते हैं ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यही होता है वो, है ना, यही होता है। अब देखो कैसे हो गया भीष्म, चलो खेल खत्म। नाउ लिसन एवरीवन केयरफुली, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2, अब न्यूमेरिकल की जरूरत ही नहीं है, मैं अब समझ गया उसको कैसे, आपका डाउट कैसे क्लियर करें। तो अब मैं क्या निकालूं, ये मेरे दीज आर माय व्हाट कोएफिशिएंट, तो मुझे यदि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हाउ द यूनिट वेक्टर विल बी कैलकुलेटेड, यूनिट वेक्टर विल बी कैलकुलेटेड सर, बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री
ठीक है, ये रहा डिवाइडेड बाय क्या होगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। बीटा 1 स्क्वायर प्लस हाँ बीटा बीटा, 2 हाँ स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर 3। प्लस बीटा टू स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस बीटा थ्री स्क्वायर, ऐसा करके हो जाएगा। और ये इंडिविजुअल ले लो आप, जैसे ये आई कैप, ये जे कैप, और ये मान के चलो ये की कैप है। अब आपका बीटा वन के बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। अब यदि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, और ऑब्वियसली ये वैल्यू यदि छोटी है, अब ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो ऑब्वियसली इट विल कम नियरली टू द जीरो। बात समझ में आई भीष्म? तो ये समझ में आया आपको? यू अंडरस्टूड माय हाँ पॉइंट? हाँ, वो वैल्यू, हाँ, हाँ जिसका भी स्लोप कम रहेगा हाँ वो हाँ टेंड्स टू हाँ, जीरो होगा। बस 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 वैसे ही खेल हो गया है। अब मुझे न्यूमेरिकल की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी समझ, अंडरस्टैंड इन दिस वे। अब जिनकी वैल्यू बड़ी थी, जैसे बीटा टू और बीटा थ्री यदि बड़ा था, ठीक है, तो आप समझे कि क्या होने वाला है यहाँ नीचे। ओके, तो इनकी वैल्यू सो इससे ज्यादा है। इन दिस केस फीचर सिलेक्शन तो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हुआ, ये तो ऑटोमेटिकली जिसका भी वैल्यू कम होगा वो ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा वो कंट्रोल अपन फीचर। लैम्बडा से कर रहे हैं ना, कंट्रोल लैम्बडा से करेंगे अपन। ठीक है, ये ओके तो कंट्रोलिंग हाइपर पैरामीटर है, ये तो कंट्रोल है, इसकी बात कर रहा था मैं। ओके। ये देखो, इसका तो क्या है भाई, इसका ये, अच्छा एक चीज और है, ये कहाँ से आएंगे बीटा वन बीटा वन, ये भी तो आपके कॉस्ट फंक्शन की कैलकुलेशंस हैं, ये भी, ये कॉस्ट फंक्शन की तो कैलकुलेशंस है, आपने हाँ पढ़ा राइट राइट, जो हम है लोग ना, कि देखे थे स्लोप, वो वी बीटा आर वन गोइंग टू कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शंस ओनली। उसके लिए भी क्या निकाला था आपने, वो स्लोप का भी फॉर्मूला था अच्छा खासा, जिसको भी डिराइव कराया अपन ने, एक्स माइनस एक्स वन, वो किसके बेसिस पर था, ओएलएस, याद करो। यस यस। तो यदि आप बैठे, इफ यू गो टू सिट टुडे फॉर योर प्रिपेयरिंग ए नोट्स, तो आप वो लीनियर रिग्रेशन के वो, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से शुरू करना। ठीक है, यहीं से शुरू करिएगा आप कि क्या होता है, और यहां तक आ जाना जो आज मैंने बता दिया, यहां से शुरू, स्टार्ट फ्रॉम ईयर। तो आई गेस सबको अब समझ में आना चाहिए कि वो रिड्यूस कैसे हो रहा है, श्रिंकेज का मतलब क्या था, श्रिंक करने का। तो आप ये तो करा आपने, तो आप जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे जितने भी कोएफिशिएंट्स है, जिन जो कोएफिशिएंट छोटा फंस गया, समझो उसका खेल खत्म, यहाँ से इट्स बीन रिड्यूस्ड। तो ये फीचर सिलेक्शन हो जाएंगे, तो वो वाले फीचर जो बच गए सो बच गए, ठीक है, हुज इम्पैक्ट आर मोर, तो अपन उसको उठा लेंगे, इनको निपटा देंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो ये मैथ्स रही है इसके पीछे। ओके, तो क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज एंड द लेसो रिग्रेशन? What's been told कि ridge regression can reduce all the coefficients by a small amount, but lesso can reduce some features more than others, and hence the completely eliminate those features. ऐसा ये कर सकते हैं। तो ridge regression can reduce all coefficients by a small amount। ठीक है सर, स्मॉल ऑल कोएफिशिएंट बाय स्मॉल अमाउंट से इनको रिड्यूस करेगा रिज, क्योंकि रिज के अंदर यू आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑल्सो, वो भी था इसका ना, स्लोप का स्क्वायर था एक्चुअली, रूट नहीं है, रूट वाली बात नहीं कर रहे। इन केस ऑफ रिच यू वेरी वेल नो दैट योर कोएफिशिएंट वाज लैम्बडा इनटू स्लोप का स्क्वायर, ये था रिच। और लेसो में क्या था, लैम्बडा इनटू स्लोप ही था। ठीक है, दैट दैट वाज ओनली प्रेजेंट। तो ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द नोट्स ये बोला गया कि रिच कैन रिड्यूस ऑल द कोएफिशिएंट बाय स्मॉल अमाउंट। ठीक है, सबको कम कम कर देंगे अपन, ये अपन रिज में कर रहे हैं, बट लेसो कैन रिड्यूस सम फीचर्स, कंप्लीटली खत्म कर देगा वो, तो कुछ को तो कंप्लीटली खत्म ही कर देगा वो, लेसो रिग्रेशन। I mean, in which situation we can be use lasso and हाँ हाँ, read आप regression? देखो, हाँ हाँ ठीक है ना, कंक्लूजन पे आते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन आल्सो। सो कंक्लूजन क्या बोला, रिज रिग्रेशन इज यूज्ड टू अवॉइड ओवरफिटिंग व्हाइल लॉसो रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर फीचर सिलेक्शन। बस, इज दैट ओके अहमद? यू नीड टू मेक अ रिमार्क ओवर दिस पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. In which situation Yes. we are going to use what? So for reducing, acha, overfitting we need to reduce ridge. In yesterday class also I did told that ridge regression is used to avoid overfitting and multicollinearity. Yeah, last class, in today's class, lesser regression is for feature selection, and you did ask for, sir, what is the feature selection here? ओके, सो लेसो रिग्रेशन इज फॉर फीचर सिलेक्शन। नहीं पता, द पीपल डोंट नो, इतना डेप्थ में जाके अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस भी करे, मेरे पास ऐसा कहीं कुछ बना हुआ नहीं है, तो आपके सामने जब आप पूछते हो तो मेरे दिमाग में जो जो आता है मैं बोलता हूँ, कोई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है मेरी। ठीक है, सो बोथ आर रेगुलराइजेशन टेक्निक एंड बोथ मेथड्स आर यूजफुल इन देयर ओन वे टू चूज ओवर द अदर अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इफ यू वांट टू अवॉइड ओवरफिटिंग, क्योंकि क्या हो रहा है, अवॉइड ओवरफिटिंग का मतलब है कि ओवरफिटिंग है, देयर इज ओवरफिटिंग, यू आर अवॉइडिंग, कुछ कम कर दिया आपने, मतलब
you have done something, और यहाँ पर फीचर जो है वो आप मतलब लेकर तो चल रहे हो, फीचर्स आर देयर, लेकिन लेसो रिग्रेशन इज गोइंग टू डू, वो निपटा ही देगा, वो फीचर को ही खत्म कर देगा। यहाँ इन केस ऑफ ओवर, आपने बोला अवॉइड का मतलब ये है कि हो रही है लेकिन आपने कुछ क्योंकि श्रिंक करा, तो श्रिंक करने में क्या हुआ कि वो क्लोज आ गए पॉइंट्स, द पॉइंट्स गेट क्लोजर, है ना, श्रिंकिंग हुई है ना, देयर इज अ श्रिंकिंग हैपेंड, ये टास्क हुआ है इन केस ऑफ रिज रिग्रेशन। बट इन केस ऑफ लेसो ना, तो श्रिंकिंग तो ऑब्वियसली देयर ना, तो इतना श्रिंक कर दिया उसने कि फीचर ही खत्म कर दिया, जो Uh, दैट्स व्हाट and हैपेंड। in case of like L1 and L2, हाँ, so L1 is like lesser लेसो, regression यस, or L1 is okay, लेसो and L2 and is rich. yeah, understand. And one more question about like when we have a lot of features like 200 or 100. In that Mm-hmm. cases, like lesser regression is okay to select Yes, the most important features, yes, yes, or we use like multi-collinearity when we multi-collinearity. use if Mm-hmm. we have like a lot of correlations among the features. I mean, which situation we can be used like there are a lot of like feature Uh-huh. selection math like Yes, yes. multi-collinearity or like less or raise regression. I mean, what in which situation we can be See, used? in what situation? Again, the point is clear that both methods are useful in their own way. We can choose one over the other according to our needs. Okay, according to our needs. And the house price prediction project, which I did, which is having 230 features. Okay, I applied linear regression over 230 features, and I got an R2 score near about 0.89, which was good over this much features only. Also I got this R2 score, and then I applied ridge. तो in case of ridge also I'm going to get, मुझे मिला स्कोर, good score I got, लेकिन when I applied lesso तो लेसो ने क्या करा, निपटा दिया। लेसो did reduced my some of the features। okay, तो in that particular case ना, my R2 score went down to 0.65, गड़बड़ हो गई। My R2 score went down when I applied Lesso on my house price prediction. Okay, तो यहाँ which is to be used where when in case of your linear regression your score is good, यदि यहाँ पर score good आ रहा है तो ridge में भी मुझे लग रहा है कि ridge also help me in going to give the good results। क्यों? क्योंकि ridge के अंदर whatever be the features which are present in linear regression वो सब की सब हैं, all are there, क्योंकि avoid control करा है मैंने overfitting को। तो ऑल आर देयर, बट कंट्रोल स्टेट में अपन ने काम कर दिया, वी डिड परफॉर्म दिस थिंग इनटू कंट्रोल स्टेट इन केस ऑफ रिच। सो ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन रिच which are available in linear regression, but in case of linear regression we are going to drop, we are going to eliminate some of the features। okay, directly there will be Is there- elimination, and if there is Yeah, elimination, okay, so this is the score which I got। so in what case if you want to have a compromise with the your overfitting, okay, so you can use the ridge regression, and if you want to have the feature selection technique, that means what features are highly contributing to my target, which are the good features, so in that case you can use the lesser regression। I mean, in sometimes is there any chance if we apply like less or regression because that can be actually a shrink is the coefficient, and so is there any chance that can be actually reduce the most important features through the less so? Yes, it do that now, it do the same, it reduces the coefficients only, but those Like features for which example, like those features, see, it reduces, both the techniques are going to reduce the features, both techniques yeah, are going to okay, reduce the values of beta। okay, both the techniques are going to reduce the value of coefficients, it's applicable to both of the things, they are shrinking, but the point is how much shrinking, how much, that's the question। so lesso is shrinking a lot, lesso is shrinking a lot, and it's sometimes it's shrink nearly to zero, so I can say it, okay, you are zero only। so if this particular coefficient multiply is zero, multiply to any of the coefficient, your result will become zero, your if the coefficient is zero, if it's multiplied to any of the feature na, the result will be zero, so that feature is dropped। if that feature is dropped, then I'm going to work upon rest remaining of the features, so those remaining features are the features which are selected, this is feature selection। but this doesn't happens in ridge regression, no, there is a shrinking in ridge also, there is a shrinking, but not that much. What is the reason behind that? Formula,
You can see one is lambda slope and one is lambda slope का square. ये reason है, सब maths ही है. Mathematical reason is there. There is a mathematical reason only. Okay, ये formula. That's the only reason. Okay, so we are in case of ridge, we are dividing by square of the slopes. हाँ हाँ So हम लोग ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं. हाँ हाँ yes. Okay. और In case of less हो ना तो we are dividing the value by its वो सबका हाँ, square root by से. sum of the हाँ slopes. सब हाँ वो सब पूरा sum of the. ये रीजन है. हाँ ये reason है. Obviously maths लग रहा है पूरा. There's a complete maths applicable. So if you say you are available with 2i plus not 3 and 4 लेते हैं, चलो 3i plus 4j for example, you are available with this thing 3i plus 4j. So if I'm going to calculate, it will be 3 upon 3 का square plus 4 का square I cap plus यहाँ हो जाएगा 4 upon 3 का square plus 4 का square j cap, ये हो गया. So this will be 3 upon what? 5 हो जाएगा. 3 upon 5. Okay, and this will be what? 4 upon 5. ये हाँ this thing happens where? In case of ridge. अरे स्लोप का स्क्वायर ridge. नहीं है, अरे नहीं सिर्फ स्लोप ही है ये. दिस इज ओनली यूनिट वेक्टर स्लोप. Hello sir, I'm in class sir. Hello yeah sir, I'm in class sir. I will connect you sir in some time sir. Okay yes sir. हाँ yes say. Hello, am I audible? Yes, you are audible. ओके सो ये स्लोप मतलब अभी तो सिर्फ यूनिट वेक्टर ही निकाला ना. आई जस्ट कैलकुलेटेड ओनली यूनिट वेक्टर. तो Okay, अभी okay, divided by- रिज के अंदर क्या करना है? स्लोप का स्क्वायर करना है. आई नीड टू परफॉर्म द स्लोप स्क्वायर. ये टास्क परफॉर्म Okay. करना है. Okay. ओके तो स्क्वायर परफॉर्म करेंगे तो फिर वो अलग चीज है. That's a So different उस केस case. में divided by 25 हो जाएगा. हाँ हाँ तो ऊपर भी और तो होगा, in case ऊपर of भी होगा, Tesla, ऊपर भी होगा, अबव वन ऑल्सो. ठीक है तो आप यदि ऐसा बोल रहे हैं तो यू कैन हैव अ कंसिडरेशन रिलेटेड टू योर मतलब क्या होना क्या होगा यहाँ देखो 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 16 बाय 5 16 बाय सॉरी 3 प्लस 4 इज योर 7 7 बाय 5 ऐसा करके कुछ हो रहा है ना 7 बाय 5 just vector by उसका हाँ बाय magnitude. मैग्नीट्यूड. हाँ वो सिर्फ आपका लेसो में वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. तो लेसो में हम लोग ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहेगा इन केस ऑफ रीजन लेसो. हाँ. डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंज होगा. अब देखो नहीं नहीं अब सुनो रिज के अंदर क्या होने वाला है. रिज में बोला था पूरे स्लोप का स्क्वायर है वो पूरा स्लोप का स्क्वायर है ना. हाँ, ओके हाँ, हाँ. यानी कि उसका कैलकुलेशन ही डिफरेंट था. उसका कैलकुलेशन क्या था? द कैलकुलेशन फॉर योर रिज वॉज व्हाट इट इज कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है. तो यहाँ 3 का भी स्क्वायर करोगे प्लस 4 का भी स्क्वायर करोगे रिज में. इन केस ऑफ रिज और लेसो में क्या कर रहे थे तुम सिर्फ 3 प्लस 4 कर रहे थे मॉड बस ये तो कर रहे थे. और यहाँ ये करना है तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 7. 7. अच्छा डिवाइड तो करना ही पड़ेगा इनको. सो जो डिवाइड करेंगे वो हाँ मैं डिवाइड किससे करूँ? विद whom आई एम गोइंग टू डिवाइड विद whom आई एम गोइंग टू डिवाइड. यहाँ क्या होने वाला है? सो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर से हाँ. डिवाइड करेंगे इन केस ऑफ रीज और लेसो में सिर्फ ऐड करेंगे. ऐसा है क्या? हाँ लेसो में देखो इससे डिवाइड तो मेरे हिसाब से 5 से लग रहा है. डिवीजन तो 5 से होना चाहिए. मैग्नीट्यूड वेक्टर मतलब ये ऐसा इतना हो गया. और नहीं चलो छोड़ो ठीक है यदि इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स अभी की यदि हम छोड़ दे तो बात नहीं करते. ऐसे 7 एंड ये हो गया 25 आपकी. यदि इन नॉर्मल इन नॉर्मल नो यू हैव लर्न ना कि सिर्फ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करना और कोएफिशिएंट्स को ऐड करना दैट इज L1 एंड दिस इज L2. इतना ही पढ़ा था ना हमने. चलो मान लो इतना पढ़ा था तो ठीक है. एक हो गया 25 वैल्यू एक हो गई आपकी 7 वैल्यू. ये दोनों हो गया. ऑलराइट. और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम इसको सही तरीके से अपना जो पढ़ा है तो ये आपका क्या होने वाला है इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा मुझे किससे इसके मैग्नीट्यूड से.
इसके मैग्नीट्यूड से मुझे डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू गेट हियर 5 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ यदि मुझे मिल रहा है, ऑलराइट, तो यहाँ आप कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो। 5 5 एंड 5/7, दिस विल बी 2, नहीं 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसने तो सबसे ज़्यादा ही श्रिंक कर दिया। हाँ, मैं एक जनरल लेसो बता रहा ज्यादा हूँ, shrink कर सो लेसो इज श्रिंकिंग अ लॉट, या ज़्यादा श्रिंक कर रहा रहे है। ओके, हैं। यस, और लेकिन यहाँ वी कांट सी दैट काइंड ऑफ श्रिंकिंग, तो ये तो दिस विल गोइंग टू हैव योर फीचर्स, फीचर अवेलेबिलिटी हो गई होगा, ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर फीचर खत्म भी कर देगा वो पूरी तरीके से। दैट्स व्हाट हैपेंस इन लेसो। तो अभी द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई थिंक अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा ये सारी बातें, लेसन रिच रिग्रेशन। आई होप यस, ये यस। क्लियर हो, इतने सारे मेरे वो बन गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये वाली बात है। तो लेसोरेज रिग्रेशन की डिफरेंसेस क्या हैं? पेनल्टी टर्म, पेनल्टी टर्म जो है, रिज रिग्रेशन यूजेस L2 और L1 लेता है आपका लेसो। लेसो रिग्रेशन कैन लीड टू स्पार्स सॉल्यूशन विद कोएफिशिएंट्स बीइंग एग्जैक्टली विद जीरो, हो सकता है कोएफिशिएंट्स को जीरो कर दे तो वो फीचर ही खत्म कर देगा, फीचर एलिमिनेशन टेक्निक है। सो लेसो इज अ फीचर रिलेशन टेक्निक। रिज रिग्रेशन श्रिंक करता है कोएफिशिएंट्स को, लेकिन जीरो कभी नहीं करेगा वो, जीरो तक नहीं होगा। दैट मीन्स ओवर फिटिंग को अवॉइड करेंगे ना, श्रिंक करके कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट्स को क्लोज लिया है, ये हमारा काम है रिज के अंदर। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द पॉइंट्स क्लोजर। ओके, तो कब करना है? जैसे मान के चलो आपके पास वैसी फीचर कम है और आप बोल रहे हो सर मैं लेसो लगा दूंगा, तो भाई तुम तो यार खेल ही कर रहे हो यार, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। इफ यू आर ऑलरेडी अवेलेबल विद लेस फीचर्स, ओके, एंड यू टेल सर वी आर गोइंग टू अप्लाई लेसो रिग्रेशन, सो यार ये ड्रॉप ही कर देगा, तो तुम तो यार इतने कम फीचर पे तो वैसे ही काम नहीं, तो आप पहले क्या ट्राई फिर करोगे? इंफॉर्मेशन लो। हाँ हाँ, पहले तो आप रिच से ही काम करोगे ना। देखिए रिच से काम राइट, राइट। है ना, तो ड्रॉप तो करना ही नहीं है, लेस लेस फीचर्स पे तो लेसो लगाना ही नहीं है। ओके, तो रिच से ही देखेंगे, रिच से यदि बात बन जाती तो ठीक है। ओके, तो फिर अगला मल्टी कोलिनियरिटी, हैंडल्स मल्टी कोलिनियरिटी वेल बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि लेसो में अर्बिट्रेटली सिलेक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम ग्रुप ऑफ हाईली कोरिलेटेड प्रेडिक्टर्स, ये सारी बात है वो कर लेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं इसमें, हालांकि कहने के लिए इतना सा नहीं, बहुत कुछ डिस्कशन हो गया इन 2 days, वी डिड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर दिस लेसन रिज रिग्रेशन। तो दोनों रेगुलेशन टेक्निक है, ओवरफिटिंग इट्स गोइंग टू हेल्प करेगी, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में इशू आया था, तो उसी इशू को खत्म करने के लिए वी डिड अप्लाई दीज टू थिंग्स। ऑलराइट, सो ये बात थी, बाकी फॉर्मूला सेम है इसमें और कुछ नहीं। नोट्स आई विल मेल, ये सब फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं बोला है सेपरेटली। ओके, सो द नोट्स आई विल मेल टू यू। ऑलराइट, इज दैट ओके भीष्म? Everyone? यस सर, यस सर। Okay, so let me, I hope it should now understand to everyone that what does this lasso and ridge regression means and why we are performing this thing. What is the difference between these two? When to use which technique? Okay, so it's mandatory for you all to make a notes proper. Okay, कि linear regression I told ना, if you want to do the handout, start from this thing y equal to mx plus c, यहाँ से फिर क्या नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी, क्या हमने डिफरेंशिएशन करे थे, ये एम और ये स्लोप कैसे निकाला था हमने, स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैसे निकाला था। ओके, थोड़ा सा बैठ के इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म ना, तो ये तो खेल ही हो गया फिर तो। लीनियर रिग्रेशन इज ऑल ओवर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या अजम्पशंस हैं, वट एवर बी द रिक्वायरमेंट्स आर, कब अप्लाई करना है, क्या इश्यूज आ सकते हैं। ओके, सो you now with these all things which I taught, you should be clear cut idea, you should be having clear cut idea about when to apply, what could be the issue, and then what could be the solutions are, होने चाहिए। Okay, so let me stop the recording now.